And today, Ganpati Bappa is leaving earth. He is going back to heaven, and he has landed to earth for 10 days to give us बुद्धि इंटेलिजेंस. सो आज का जो सब्जेक्ट है इंडो यूएस इंडो कनाडा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर थर्ड वीडियो मेरा ये. जो लोगों ने मेरे पहले 2 वीडियो देखे नहीं हैं वो कृपया देख लें. पहली बात तो मैंने ये कहा था कि ये मामला बहुत एस्केलेट होने वाला है, बट नाउ मेरा फोरकास्ट अगला है कि इंडो कनाडा रिलेशंस आर गोइंग टू बी एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन ए ड्यू कोर्स, इन ड्यू पीरियड. दूसरा इसमें यह है कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में. वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, अमेरिकन एम्बेसडर ने कनाडा को क्या कहा वो भी पब्लिक डोमेन में आया है. सो जो वेरीफाइड फैक्ट्स है और जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उसके आधार पे मैं अगली बात कर रहा हूँ. एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स द पजल, एंड आई एम अप्लाइंग ऑल्सो इंट्यूटिव एबिलिटी एंड माई एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन विद द इंटेलिजेंस. ओके, अब जो एक्चुअल एविडेंस इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में वीडियो भी आया है. ठीक है, ये निज्जर नाम का जो आदमी है उसको कैनेडियन पासपोर्ट कब मिला उसके बारे में इमिग्रेशन की बहुत दुविधा है. ये पहले इंडियन सिटीज़न था, 3 बार उसका रिजेक्ट हो चुका है, अभी तक उसके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि वो कैनेडियन सिटीज़न बना कर. इसके बाद ये भी है कि जो रॉ के ऑफिशियल ने उसकी हत्या में है, ऐसा जो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया है, वो स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ ए अनइंटेलिजेंट. इट्स ए स्टेटमेंट आइदर गिवन बाय समवन लो IQ पर्सन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कुछ 20 या 22 IQ होगा जिसने दिया होगा. जस्टिन ट्रूडो को तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनका लो IQ है, लेकिन जिसने भी उनको ब्रीफ किया होगा वो लो IQ का है, क्योंकि क्रेडिबल एलिगेशन शब्द उन्होंने यूज़ किया है. और डिप्लोमेसी में, इंटेलिजेंस में, पब्लिक डोमेन में, डेमोक्रेसी में इस तरह के शब्द यूज़ नहीं होते हैं. सो अब इसमें इशू ये है कि अब सब डिमांड हो रही है कि सबूत दीजिए. उनका कहना है कि हमने भारत को सबूत दिए हैं और भारत का कहना है हमारे पास कोई सबूत नहीं है. ऑन द कंट्रोरी, निज्जर के बारे में 2016 2018 के डॉजियर्स और डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं, और धीरे धीरे अब निज्जर के बारे में उसके क्लिप्स आने लगे हैं. एंड ही इज़ ए वेरी यूनिक काइंड ऑफ प्लम्बर इन कैनेडा हु कैन यूज़ द AK-47 फॉर ड्रिलिंग, राइट. सो प्लम्बर लोग ड्रिलिंग करते हैं ना दीवार में वगैरह, पाइपिंग. सो निज्जर वॉज ए वेरी यूनिक प्लम्बर, एंड ही यूज टू हैव, मे बी ही वॉज यूजिंग ए टॉय एज ए फन और समथिंग लाइक दैट. तो अभी उसके पॉपअप हो रहे हैं. फिर उसका एक वीडियो भी आया है दूसरा कि उसमें उसने इंदिरा गांधी का हत्या का समर्थन किया है, जनरल वैद्य का समर्थन किया है. तो कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो और निज्जर ये जो मामला है, और फिर इसमें रॉ को लाना, फिर इसके कुछ ISI लिंक्स, अब इसको हम एज ए इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. सो व्हाट इज इंटेलिजेंस? सो इफ यू गूगल दैट देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीक्रेट सर्विसेज डू, हाउ दे वर्क, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देन द पीपल हु हैव डन, who have worked in Pentagon, CIA, KGB, RAW. There are a lot of people who will explain. And in the field of intelligence gathering and secret services, you are not known by your success, you are known by your failures. When it fails, then it's very miserable. But when you get success, you cannot disclose it because you don't get award, because that's a secret service. तो अब इसमें हुआ क्या है कि 2 प्रकार की इंटेलिजेंस है, ऐसा कनाडा का कहना है. ओवरऑल उनका ये कहना है कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हाँ? और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, अब ह्यूमन में क्या होता है कि किसी को सर्विलेंस करना है पर्सनली, या उसको शैडोइंग करना है, ठीक है, या उसका पीछा करना है, उसकी जानकारी इकट्ठा करनी है, वो किससे बात कर रहा है, किसको मिल रहा है, वगैरह वगैरह, जो एक ट्रेडिशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस कहेंगे हम लोग. उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, हनी ट्रैप भी होता है, उसके ट्रैवल के लिए होता है, सब कुछ जानकारी होती है, वगैरह वगैरह. उसके स्टाफ के अंदर कुछ लोग प्लांट किए जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें. जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आपके जो वीडियो कॉल्स है, ऑडियो कॉल्स है, उसको ट्रैक करना, वो तो आसान हो गया आज के ज़माने में. फ़ोन टैप करना, आपके जो क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो सारा डेटा जमा करना, और फिर इसमें इसको साइबर के अंदर डालकर उसका एक पैटर्न देखना कि आदमी किसको मिल रहा है, किससे मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं 2 बातें अब क्लियर हुई है. कनाडा का जो CSIS जो है, they might have intercepted some calls or some kind of conversation of raw official, whoever that person is, who was appointed as a diplomat in the Canada embassy, Indian embassy. The second is they had said that look, we have also some human intelligence. Then came the American ambassador to the Canada. He told that there are 5 eyes club, and then they have also shared some kind of information. Now what Americans
are telling, in a sense, that we are not given the exact information about the raw official involvement. We had given some kind of inputs. So they are backing up. So they are backing from their own statement. And one of the American ex-Pentagon official also said that we had not given any smoking gun to Mr. Trudeau. So there was no just black and white state. No, this raw official is person is involved. He had gone there and he had killed it. By the way, no intelligence officer, especially diplomat or anybody that for that matter, goes and kill anybody. Neither CIA, neither KGB or anybody. There are hitmen, there are contract killers, there are private army, there are a number of people who does this job. So the saying that this person, raw official, was involved. Now here is the trap. Now here comes the twist in this trap. What has happened is that why Justin Trudeau is so much emotionally, politically, professionally, तो है ही, emotionally connected with this nature. Who was Nijjar for him? Was it Man Friday? Was it his blue-eyed by? Was it had Trudeau planted in Khalistani movement? Was Nijjar himself as working as a double agent in Khalistani movement? And then some Khalistanis, hardcore communist Khalistanis came to know that, you know what, he has gone rogue. He's a rogue element in our Khalistani movement. She should be eliminated by the Khalistanis. But whom to blame? On the contrary, there is second point of view. So I'm giving you a vantage point, a vantage look to how and why Trudeau will have to resign. But that's the first victim. And why Canada Intelligence Agency and why this case is going to be one of the most blunder in the recent history after Khashoggi, what happened in Saudi Arabia and all these things. That was a different case actually. He got killed in the consulate and all these things. But here different case is there. How this case is going to be very big blunder. So we have to study it as a case study. So what happened is that the raw official might be working as a double agent or triple agent. Okay, on one side, he was showing some kind of involvement and keeping some footprints to track him and show the CSIS, Canada Service, Secret Service, Intelligence Services, and if the ISI is involved, to show that he is authentically or engaged to some extent in this extrajudicial killing or an attempt to track Nijjar. So on the one side क्या हो रहा होगा कि रॉ ऑफिशियल ने क्या किया होगा कि हाँ, अगर मुझे किसी को मेरा पीछा कर रहा है कोई और मुझे उसको ट्रैक करना है, सो आई हैव टू बिकम माई सेल्फ एज ए बेट. और ये इंटेलिजेंस में होता है, सीक्रेट सर्विस में होता है. तो रॉ ऑफिशियल एक अपने आप बेट बन गया है एंड ही हैड बेट. सो अब बेट बनने की वजह से क्या हुआ कि कनाडा के CSIS, ISI, खालिस्तानी मूवमेंट के लोग और ये 5 के जो लोग हैं, दे स्टार्टेड सर्वेलिंग है and he might have left some footprints, okay, to trap these people. That's the one point to look at it. The second, मैंने आपको पहले बताया कि खुद निज्जर जो है वो कहीं ना कहीं झुक गया होगा इंडिया की तरफ. और ऐसा हुआ है, हमने कई चीज़ों में देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, यूरोप में देखा है. कई बार ऐसा होता है कि डबल एजेंट होते हैं, ट्रिपल एजेंट होते हैं. या छोटा राजन की केस देख लीजिए, जब मलेशिया से उसको एक्सट्राडिशन किया तो he had surrendered to Indian Intelligence Bureau and he had given some very vital information about the Dawood, So कहीं ना कहीं क्या होता है कि गैंग वॉर्स में अंदर इंटरनल ड्रिफ्ट में लोग पलटते हैं. तो निज्जर जो है इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि he might have gone as a rogue element either on the intelligence side of the Canada और इंडिया और खालिस्तानी मूवमेंट. तो उसको मारने के लिए जो लोग आए थे they were hitmen, they were contract killers. ओके, सो उनको अगर आप पकड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो पकड़ में नहीं आए हैं. और कनाडा में इतना हत्याकांड हो रहा है, ये जून में हुआ है और अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई पुलिस. दे आर नॉट इन द कस्टडी, देयर इज़ नो इंटरोगेशन, देयर इज़ नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्चुअल किलर्स, द हिटमैन, राइट. तो अब और पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट कर रहा है कि रॉ ऑफिशियल का उसमें इन्वॉल्वमेंट है. तो कहीं ना कहीं अब एक कनाडा की जो सिस्टम है उसके अंदर एक रिफ्ट है. बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है. हमारे यहाँ जब तुकाराम ओंगड़े ने जो हमारे शूरवीर पुलिस वाले थे, जब गिरगांव चौपाटी पे when he caught Kasab, that was actual evidence of Kasab, right? And then eventually the court and police had given all these phone calls, interceptions from the boat and other
sources, and then the dossier was made, and then the case was put up, and then he was punished. यहाँ ऐसा नहीं हुआ है. Nobody from the hitman has been arrested, right? और इसमें और एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ कि इंटरसेप्शन जब हुआ होगा रॉ ऑफिशियल का या डिप्लोमेट्स का हुआ होगा, तो जिन्होंने डाटा इंटरप्रेट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट, एंड आई टेल यू विद माय ओन एक्सपीरियंसेस, समटाइम व्हाट हैपेंस इज दैट, नो, when I was working in my life and people were surveilling me, they were collecting data, they were shadowing me, they were interpreting the data. So most of the time in case they misinterpreted the data. So when I had gone to, when I just took a stop and stopped running and then look at the back, and then I decided, okay, so let's publish my data everywhere. And I went to CBI and Prime Minister Office, Supreme Court, and I published data, everything, everywhere. So everybody was shocked because the information which was shared against me was misinterpreted, misled, and they interpreted my footprints as the facts. So what happened is that sometimes the data is there, some facts are there, some footprints are there, some intercepted information is there, but you misinterpret it. You try to find out the pattern, and you have to understand there is no any direct evidence against the official or per se against the Indian government. Now in this matter, Justin Trudeau had taken Mr. Modi's name, Indian government's name. Now that is the biggest blunder and trap for Justin Trudeau, because I tell you why. India is not USA. Now when we did the surgical strike, the Prime Minister himself declared it. When Laden was killed, Barack Obama himself taken the responsibility. And throughout the world, nobody had condemned, except some Arab countries, Muslim countries. Nobody had condemned. Nobody had talked about the human rights and extrajudicial killing and something like that. When they taken out Saddam Hussein in chemical weapons and blah, 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 fake reports, nobody condemned it. I mean, few people, but not the Westerns, especially. So the Americans, and especially their presidents and the Western people and their prime ministers, had a tendency to show their superiority complex, whatever it is, or superior ego, that look, we have done it in the name of human rights, in the name of war on terrorism, okay, what they did in Afghanistan and elsewhere. लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं कहा है. जस्टिन ट्रूडो का ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था कि ये हमने इंटेलिजेंस शेयर किया है इंडियन गवर्नमेंट को, तो यहाँ वो फंस गए. First, they should have arrested the hitman. Then they should have taken the official statement from them that this guy is involved, or blah, blah, blah. Then CSIS should have made a report. Then they should have given the dossier to the Indian government. And then if the government had not responded, then there was a option to raise the issue in the United Nations. Under no circumstances, any prime minister of a democratic country can make a blame against another prime minister or any government without having any person, the actual hit man or the killer in custody, or circumstances, evidences, or the actual data. What happened in this case is that कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निज्जर ये खास आदमी था ट्रूडो का, समझे, और ये कहीं ना कहीं ये खालिस्तानी ISI और जस्टिन ट्रूडो के पार्टी का जो फाइनेंसिंग है, टेरर फंडिंग है, इसमें कहीं ना कहीं पिन पॉइंट था. और इसको मारे जाने की वजह से क्या हुआ है कि जो लिंक्स थे वो टूट गए हैं, वो शेक हो गए हैं. कभी कभी होता है ना कि हम NIA जब रेड्स करती है तो कभी कभी ऐसे टेररिस्ट पकड़े जाते हैं जो एक्चुअल टेररिस्ट होते नहीं है, वो किसी को मारा नहीं होता उन्होंने, बट वो स्लीपर सेल के होते हैं या वो दे आर बैकरूम बॉयज. तो वो पकड़ने जाने के बाद क्या होता है कि वो उनका जो नेटवर्क होता है वो शेक हो जाता है. मुझे लगता है कि ये जो ISI है कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग हैं और कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो, इनका कहीं ना कहीं एक लिंक था, और ये लिंक की सबसे अहम कड़ी थी निज्जर. ना पन्नू वॉज द पब्लिक फेस, बट निज्जर वॉज द ब्लैक एंड बॉय. वो कहीं ना कहीं अंदर का जो सब सेटिंग था वो कर रहा था, और निज्जर का एलिमिनेशन होने की वजह से ट्रूडो गॉट अपसेट इमोशनली बिकॉज ही वॉज हिज मैन. और ये 3 बार जिसका इमिग्रेशन पासपोर्ट वीजा रेज हुआ है, और आज तक कनाडा इमिग्रेशन ये क्लियर नहीं कर पाई है ग्लोबली कहीं पर भी कि उसको पासपोर्ट मिला कब, कैनेडियन सिटीजन वो बना कब, क्योंकि दावा उनका कि कैनेडियन सिटीजन है,
और 2016 में जो डॉक्यूमेंट एनआईए ने या इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दिया है, तो उसके बाद उन्होंने उसका सिटीजनशिप क्यों नहीं रद्द किया? और उसके पहले 3 बार निज्जर ने 3 बार एप्लीकेशन किया है वीज़ा के लिए, और तीनों बार ही हैड सबमिटेड फेक कॉज, फेक case, his case and fake documents, and he wanted to set up the immigration department, but they did not bow down. But ultimately, there was somewhere a very top person, I don't say Trudeau, but somewhere very close to him, had given a go to immigration department to give visa to Niger. So it means the Niger, who was wanted in India, had been planted in the Khalistani movement in Canada, and Justin Trudeau was involved somewhere there. So he is emotionally connected with Trudeau, politically, financially, okay, and some links goes to ISI. Now there is one more thing here. Whatever information, intelligence they have gathered is going to give them a goosebump. I tell you why. Because if this raw official, suppose, was actually involved in the killing, okay, and suppose he is arrested, okay, in the Canada or international court or wherever he is arrested, or suppose if Canada tomorrow declared this man is involved, these are photo and videos and blah 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 blah, all these things, and if this raw official made a statement that I did all these things on the behalf of Trudeau government, that's going to be a bombshell for the Trudeau government. Because I am now almost not say, I don't work on guessing, speculation, assumption, but now this raw officer or the people behind him, they kind of trapped Trudeau. And maybe Nigeria helped them. Because Trudeau is not a mastermind, but Trudeau is one of the kingpin in flourishing the Khalistani movement in Canada. He's the man inside the government who is supporting the Khalistani movement and who is working against Indian interest. So what might happen is that some elements inside the Canada, maybe opposition party or other interest groups, or maybe the other people, maybe from UK or Australia or New Zealand, or different lobbies or intelligence agencies who supported India's cause, or because India might have shared all the information to other countries also. That's very possible. Not only in Niger case, but the Khalistani movement. And if that's the case, and if they found that it's not Niger or Pannum, it's Mr. Justin Trudeau who is playing the very dangerous game, just like the Zia-ul-Haq, Bhuttos, and Nawaz Sharif and Musharraf. So Justin Trudeau is going to be a Pakistani dictator-like person on the Western soil. If that was the conclusion would have found in G20 people or some group of people, I think that's going to be a very dangerous thing. And I don't think that Justin Trudeau will be brought to he will have to resign in this case, and he will also face impeachment in the parliament. That's my next forecast. So इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में मैंने आपको जो भी कहा कि इंटरसेप्शन जो कॉल किए हो गए, रॉ के ऑफिशियल ने फुटप्रिंट्स जो है वो कुछ जानबूझ के ट्रू फुटप्रिंट छोड़े होंगे कि हाँ ये आप ट्रेस करो मुझे कि हाँ मैं निज्जर से बात कर रहा हूँ, निज्जर के बारे में बात कर रहा हूँ, बट मे बी ही वॉज टॉकिंग सम डिफरेंट निज्जर, देयर इज नो ओनली वन निज्जर। इसमें और भी है कि वो जो ट्रेलिंग कर रहे थे उसको, वो कौन लोग कर रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स को कौन ट्रैक कर रहा है, ISI कर रही है, CSIS कर रही है, या CIA कर रही है, या और कोई इंटेलिजेंस कर रही है, ये जानने के लिए कहीं ना कहीं रॉ ऑफिशियल को he had to close to the target, but it doesn't mean that he had killed the target or he had planned to kill the target. Okay, कभी भी क्या होता है कि मैं एक पूरा प्लान बनाता हूँ, राइट, to mislead my enemies, but I don't execute that plan, right? What happens is that there is a trap within the trap. So रॉ ऑफिशियल के खिलाफ जिन लोगों ने ट्रैप रखा होगा कि हाँ इसको मारने दो, इसको करने दो, और फिर हम पकड़ेंगे इसको, लेकिन उसने एग्जीक्यूट किया नहीं होगा और किसी और ने निज्जर को मारा है, और ऐसा होता है, ऐसे हुआ है, बहुत सारे केसेस में हुआ है।
कि somebody planned it and somebody killed it. मोसाद के केस में बहुत बार ऐसा हुआ है, MI6 के बारे में हुआ है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के बारे में ऐसा हुआ है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये हुआ है कि मारा किसी और ने है और ब्लेम रॉ ऑफिशियल को आ रहा है, बिकॉज रॉ ऑफिशियल मस्ट हैव लेफ्ट सम फुटप्रिंट्स. But what happened eventually is that now, because Justin Trudeau did not anticipate or forecast that this will give a very global publicity. He thought that this matter will be between Indo-Canada, and then we'll sort it out, and then Indian government go down or make a, we'll have shake hands and some, back channels communication, and then we'll get back to normal business. He could not anticipate the very strong reaction of the Indian government. और मैं मोदी जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बहुत शांतता रखी है. हालांकि अगर इस जगह कोई प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता अमेरिका का, तो वो तो फिर वहाँ के और 2-4 लोगों को उठा लेता, वहाँ एलिमिनेट हो जाते थे. लेकिन मोदी जी ने कभी भी पार्लियामेंट में, और मैं पूरे भारत के प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, नेहरू से लेकर मोदी तक, इन सबका मैं अप्रिसिएशन करूँगा कि विदेश नीति के बारे में जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट किया, उस तरह के भद्दे स्टेटमेंट कभी भी हमारे देश के कोई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया. जिम्मेदारी हर प्राइम मिनिस्टर ने ली है हमारे, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट या इस तरह के फालतू चीज़ें नहीं की है. तो मुझे लगता है कि मोदी जी का मैं इस बारे में स्पेशली अभिनंदन करूँगा. इंदिरा गांधी का तो करना ही चाहिए बांग्लादेश के ऑपरेशन में. फिर दलाई लामा के बारे में तो उनको बचाया नेहरू जी ने. तो हमारे हर प्राइम मिनिस्टर ने, लाल बहादुर शास्त्री, सब ने जो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने अभी बहुत संयम रखा है, और ये बहुत अच्छी बात है. इसका इंडिया का अच्छा इंप्रेशन जा रहा है पूरे वर्ल्ड में. लोग देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और कि जस्टिन ट्रूडो ने जो बातचीत की है उसको पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है. तो मैंने आपको कहा कि केस स्टडी में इंटरसेप्शन, डबल एजेंट, ट्रिपल एजेंट, और इसमें और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं ISI की लिंक एक्सपोज होने वाली है. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ खलिस्तानी के डॉजियर फिजिटिव्स वांटेड डिस्क्लोज किए हैं, लेकिन जल्द ही इसका ISI कनेक्शन भी सामने आएगा. और वो आने के बाद तो CSIS में जो प्लांटेड लोग होंगे, कनाडा सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर जो प्लांटेड लोग होंगे, चाहे वो खलिस्तानी के हो सकते हैं या और किसी लोग के हो सकते हैं, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, एंड लेट्स हाउ इट अनफोल्डेड. सो वी कीप ट्रैकिंग ऑन दैट. थैंक यू वेरी मच.